medications maternity. Motivation bolus ki hai suddenly. Motivation bolus is be hungry for success, hungry to make your mark, hungry to be seen, hungry to be heard, and hungry to have an effect. So you should have this innate thing in yourself that I will succeed. You should ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕੇ ਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ if you are hungry for food ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? You go to the kitchen, ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਗੀ, ਬਟ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। So for this you will have to study. You will have to be hungry to make the mark कि हाँ मैंने पढ़ना है मैं इस टाइम पे। तो you should be hungry. Hungry मतलब craving होनी चाहिए कि हाँ मैं पढ़ना है, that only will lead me to success. Hungry to be seen. Hungry to be seen with NCLEX RN title. Hungry to be heard as an RN. Hungry to have an effect on people's life after you have had gone through all of this content. ठीक है? तो इतना knowledgeable बनना है, so be hungry for that. And as you move up and become successful, make sure also to be hungry for helping others. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। So be hungry for helping others. Now, on the lecture. So it's understanding medications affecting labor and delivery important है क्योंकि एक कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स पाते हैं फीटस या फीटल आउटकम्स थे, या जे ਆਪਾਂ improperly use कर लिए, this will put a negative pressure also, right? They can affect fetal heart rate, they can put the fetus in distress, or they can prevent the fetus from distress. They can, जे ਆਪਾਂ oxytocin ज्यादा देता, I gave you the hint, it can lead to uterine rupture, ठीक है? And it can also lead to fetal distress because जे placental insufficiency हुई during the contractions, blood vessels constrict, and during constriction there is less blood flow to the fetus. जे already compromised रहता है और compromised हो जाएगा, ठीक है? Early sign क्या होता है fetal distress था? Bradycardia or tachycardia? They have studied Tachycardia. tachycardia. Earlier it will be tachycardia, but later if it is for prolonged period of time it will be bradycardia. Okay, very nice. Now, this include medications used to induce or augment labor and medications used in management of preterm labors. So OBG medications आप differentiate करते हैं. तो tocolytics, I guess I've used this word multiple times. The tocolytics are which reduces contractions, and are used in preterm labor. जिथे थानू लगता है कि बच्चा हले मदर दे वूम दे विच रहना चाहिए है, he or the fetus is not mature yet and we need to stop or we need to slow the progression of the labor. ठीक है? तो ਆਪਾਂ as a tocolytic use करते हैं magnesium sulfate, and ਤੁਹਾਨੂੰ magnesium sulfate ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, if we are providing a patient with magnesium sulfate, the respiratory rate will be low, his deep tendon reflexes will be low, his urine output will be low. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ low ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ it means it is sign ਕਿ magnesium toxicity है. So you have to give the person calcium gluconate, and calcium gluconate किमें देना है? It should be given slowly. And how much slowly? Over 10 minutes or in 100 ml NS, or they will always tell you give it in a IV piggyback ch dena hai, and that should be through a infusion pump, syringe pump nahi, through an infusion pump. समझ लग रही है? Are you understanding the safety aspect? Magnesium sulfate, I am expecting कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ, deep tendon reflexes low, respiratory rate low, urine output low. So these सारी manifestations are the sign symptoms of the magnesium toxicity. But magnesium sulfate आप देने क्यों? As a tocolytic. Tocolytic means to decrease the contractions. क्योंकि जितने ज्यादा contraction tachysystole हो रहा है, उतने we have to somewhat manage. Okay. Now, terbutaline. So terbutaline, it's also beta agonist. ठीक है? Beta agonist होता है. Terbutaline is a beta agonist. Discontinue and notify if heart rate is more than 120 by 1. तो सी ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ just introduction ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ terbutaline ਸੁਣਿਆ? terbutaline beta agonist ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ bronchial asthma ਦੇ ਵਿੱਚ. You will see this in NCLEX very often. Just write it down. Terbutaline is a beta agonist or it's a bronchodilator.
बीटा एगोनिस्ट और ब्रोंकोडायलेटर जेड़ा हाइपोकलीमिया भी कर दिंदा है बिकॉज जदों ਆਪਾਂ ਟਰਬਿਊਟਲਿਨ ਦਿੰਨੇ ਆ there is influx of potassium inside the cell तो for this effect ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਈਪਰਕਲੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ बीटा एगोनिस्ट्स ठीक है ज्यादातर ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਬਿਊਟਾਮੋਲ सोचोगे बट टर्ब्यूटलिन भी ये काम करता है तो सी टर्ब्यूटलिन is beta agonist तो beta receptors are present on the heart see beta receptors are present on the heart see ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੀਟਾ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੇਗਾ ਟਰਬਿਊਟਲਿਨ ਵਿਲ ਐਕਟ ਔਨ ਸੀ ਟਰਬਿਊਟਲਿਨ ਇਹਦੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ठीक है टर्ब्यूटलिन will act on these receptors so when it will act on these receptor it will increase the heart rate तो sympathetic response activate करेगा तो now you tell me जब मदर ऑलरेडी टैकीकार्डिक है टर्ब्यूटलिन देना है No. no टर्ब्यूटलिन so that is the rationale discontinue and notify HCP if heart rate is more than 120 by 120 ठीक है and ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਗ ਨੂੰ withhold ਕਰ ਲੋਗੇ now about this nifedipine so can anyone tell me what is nifedipine लिख लियो नाल नाल nifedipine is a CCB calcium channel blocker it is used as it is primarily antihypertensive drug but here we were using nifedipine as tocolytic ठीक है ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ it decreases the contraction of this uterus myometrium myometrium ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ oxytocin receptors that are now fully activated at the term or before the term by some pathology ਹੁਣ ਆਪਾਂ nifedipine ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ uterus ਨੂੰ relax ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ बट देखो जो यूट्रस रिलैक्स होएगा नाल ब्लड वेसल्स भी रिलैक्स होंगे if blood vessels are dilating you tell me if blood vessels are dilated तो कट प्रेशर होएगा कि ज्यादा प्रेशर होएगा इट विल लीड टू लो प्रेशर एक कदी तुसी एक मैनू ये दसो अपनी स्कूटी धोती है स्कूटी या गड्डी धोती कदी धोती है ओदे अगे उंगली लगा देते कई बार उंगली लगाने हो Yes. दसो प्रेशर घटता है ज्यादा ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਫੇਡੇਪਿਨ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਬ੍ਰੈਡੀ ਸੌਰੀ ਇਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਹਾਈਪੋਟੈਂਸ਼ਨ ਓਏ ਨਾਓ ਇੰਡੋਮੈਥਿਸਿਨ इंडोमेथिसिन ਜਿਹੜੀ ਹੈ इंडोमेथिसिन it has risk for premature closure of fetal ductus arteriosus ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ fetus ductus patent ductus arteriosus ਜਿਹੜੀ ਹੈ ductus arteriosus ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ इंडोमेथिसिन ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ इंडोमेथिसिन ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਸੈਕਿੰਡ Okay. Now, uterine stimulants ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ oxytocin तो oxytocin ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ you have to monitor for uterine tachysystole मतलब uterus ਦੇ ਵਿੱਚ contractions can be more forceful ठीक है which can lead to which condition uterine rupture then methyl arganovirine so this causes vasoconstriction and please note that methyl argonovine is contraindicated in hypertension ਨੂੰ flare up ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ तो ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ 90% ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ओके नाउ कार्बोप्रोस्ट देखिए मीसोप्रोस्ट कार्बोप्रोस्ट ਆਪਾਂ यूज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स ठीक है so these are contraindicated in asthma ठीक है you will not see here the word asthma in NCLEX world you will not hear this word more
It is contraindicated in asthma. India wale asthma कहंदे, otherwise it's asthma. It's as asthma. In asthma, what you will see, it can flare up. It's so the asthma flare up हो सकता है if you give the carboprost. So before giving carboprost, nurse will always obtain the history of asthma. Clear है? Yes, sir. Okay. Now, cervical ripening agents. So please note that these are available in the form of creams. These are available in the form of gels. So कई बार ਆਪਾਂ before giving oxytocin, we give people mesoprost or dinoprost vaginally. ठीक है? तो A vaginally दे देने हैं, and sometimes this mesoprost and all these are also used to prevent PPH. So these are basically used as cervical ripening agents. करते की है when we put this on cervix, है ना? It sort of makes the oxytocin receptors more activated. जो ज़्यादा oxytocin receptors activated होंगे, they will respond well to the oxytocin. So by this, now you know that mesoprost and dinoprost, this can cause uterine tachysystole. ठीक है, contractions को ज़्यादा enhance कर देगा. Okay, now cameras off हो गए कि मैंने नहीं देख रहे बाकी आंदे तानिया मैडम होनी. Okay, next. Newborn medications. So in newborn medications, देखो erythromycin. So did we talk about gonorrhea? Gonorrhea in pregnancy? No. So if No. the female has gonorrhea in pregnancy, the fetus has the risk for developing some of the pathology in the eye. Fetal the eye de which eye infection ho sakta hai. At that time, we put the patient put on the patient erythromycin. ठीक है, erythromycin 1 to 2 centimeter ribbon in both eye from inner to outer canthus within 1 hour of birth. इधर आ जा. ठीक है, within 1 hour of birth. Then vitamin K देने ਆਪਾਂ. Vitamin K किਵੇਂ देना है? Vitamin K within 1 hour of birth. देने क्यों है? Anyone can tell me? Vitamin K, why do we give vitamin K? I guess we had a discussion on this. If we did not had, you can also put your contribution that why do we give vitamin K? So see, fetus, vitamin K is made by our intestine. साडा gut vitamin K बनांदा है. तो fetus दा gut हाले active नहीं होंदा. So for that reason, जो premature बच्चे हैं, उन्हां विच तो vitamin K है ही नहीं. It can lead to hemorrhagic disease of newborn. So to prevent hemorrhagic disease of newborn, vitamin K is given within 1 hour of birth, and it is given IM in the anterior lateral aspect of thigh. समझ गए? Note down कर लो नाल. I'm not writing these things. These things are to be written by you. Hepatitis B the vaccine. Give IM before discharge. ठीक है? So at birth we give hepatitis B and vitamin K. ठीक है, OPV की भी कई बार देते हैं. So now specialty medicines. We give betamethasone and dexamethasone, both are used. This promote fetal lung maturity. And जो preterm होवे, preterms ਦੇ ਵਿੱਚ fetal lung mature नहीं ਹੁੰਦੇ. So in such cases we give betamethasone. Okay. Now, monitor for maternal hyperglycemia. Because कभी भी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ steroids ਦਿੰਦੇ ਆ, steroids can lead to hyperglycemia. Okay. Now, RH immunoglobulin. Immunoglobulins are given at 28 weeks of gestation and within 72 hours postpartum. If fetus is positive, RH positive. ठीक है. Now, TXA is a contraindicated with a history of blood clots. ठीक है जी. Now, talking about uterine stimulants, oxytocin वर्गे दवाइयां सारियां आप कहने oxytocics, oxytocin है, other medications are dinoprostone and methyl ergovarin.
Now, pharmacological actions. Uterine stimulants increase the strength, frequency, and length of uterine contractions. Now, talking about oxytocin. Oxytocin is to induce labor. Post term pregnancy ਦੇ ਵਿੱਚ premature rupture of membrane ਭਾਵੇਂ preeclampsia ਹੋਵੇ. It enhances labor with dysfunctional labor, delivery of placenta. So do you know, in active management of third stage of labor, we give oxytocin 5 IU IM to expel out the placenta. पढ़िया या पुराना याद Yes, है? sir. पढ़िया. दिन्ने ਆਪਾਂ है ना, पुराना ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਡਿਲੀਵਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, they give the person oxytocin. oxytocin ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? oxytocin ਦੇਣ ਦੇ Contraction. ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, it will expel all the products of this conception outside. ਜੇ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਟਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਫਿਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ. Very good. It leads to postpartum hemorrhage. Second, it can lead to puerperal sepsis. ठीक है? Now, management of postpartum hemorrhage, as I told you, stress testing ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰਦੇ हैं. Contraction stress test ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰਦੇ हैं oxytocin. Yes, sir. Yes. Now, complication. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ complication ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ? Complication ਕੀ ਹੈ? uterus rupture ਹੋ ਜਾਏਗਾ, uterine tachysystole, placental abruption. तो कई बार oxytocin ਦੇ ਕੇ ਵੀ placenta ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। केन ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। तो placental abruption भी हो जाती है जो आप oxytocin ਦਿੰਦੇ ਆ, and it can also lead to hyponatremia. ठीक है? Now, pre-assess risk factors like multiple deliveries, monitor the length, strength and duration of contraction, fetal status देखना है, vital signs देखने हैं mother and fetus दोनों दे, monitor intake output, contraindication किथे किथे है? Contraindication maternal factor sepsis होवे ता नहीं देना, unripe cervix च नहीं देना, active genital herpes च नहीं देना, history of multiple births ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं देना, uterine surgery च नहीं देना, and CPD ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं देना. What is CPD? Cephalopelvic disproportion. ठीक है जी। ना फीटस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੰਗਸ ਇਮੈਚੁਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ बेचारा, तो ਉਹਨੂੰ नहीं देना oxytocin. Cephalopelvic disproportion ਚ ਵੀ नहीं देना, fetal malpresentation, prolapsed umbilical cord, fetal distress ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, placental abnormalities ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, threatened spontaneous abortion ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ठीक है? Now, interactions with oxytocin. CNS depressants से दे रहे हो, increases the effect of oxytocin, MAO inhibitors the effect कोई है नहीं। ठीक है? Nursing intervention, concurrent use नो avoid करो, vital signs, uterine activity, fetal status monitor करते रहना, infusion pump ਦੇ through ही देना है। ठीक है? Flow rate ਤੁਸੀਂ increase करना है, such as 1 milli unit per minute every 30 to 60 minutes. तो बहुत rapidly इन्हें increase नहीं कर सकते। डायरेक्ट आईवी बोलस दे सकते हैं, नेवर गिव आईवी बोलस, ऑक्सीटोसिन आईवी बोलस नहीं देना। ठीक है? आईएम लग सकता है, आईवी बोलस नहीं लग सकता। मॉनिटर बीपी, रेस्पिरेटरी रेट एंड पल्स एवरी 30 to 60 मिनट, एंड विद एवरी डोसेज चेंज करनी है दोस्ती। ठीक है? केयरफुली मॉनिटर यूट्राइन contractions every 15 minutes and with every dose change during first stage of labor and every 5 minutes during second stage. गोल की होता है contraction that last 1 minute or less every 2 to 3 minutes. Now, monitor for uterine tachysystole. तो ये बहुत ही important है। uterine tachysystole की definition की है more than 5 contractions in 10 minutes, contraction occurring within 1 minute of each other, or a series of single contraction lasting greater than 2 minutes. Is it clear? Now, continuously monitor. तो हम देखो तुसी दो चीजें ही करनी है इथे, बच्चे ਨੂੰ देख लो ते मदर ਨੂੰ देख लो, that's it. ठीक है? Now, dinoprostone. Dinoprostone की है, uterine stimulant है, uterine tachysystole कर देगा, वही चीज contractions देखनी है, fetal status देखना है, vital signs देखने हैं। तो contraindication की है, uterine stimulant है,
तो जब प्रीवियस सिजेरियन बर्थ है, स्कार्स ने यूट्रस रप्चर फेर कर जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, वेजाइनल ब्लीड हो सकती है। तो जिन्हों हाइपोटेंशन की हिस्ट्री है या हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, ध्यान नाल दवाई दिओ। अस्थमा वाले ਨੂੰ भी ध्यान नाल। इंटरैक्शंस की है, 4 ऑक्सीटॉकिक्स दोगे तो इफेक्ट ज्यादा ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। तो बच्चे ਦਾ मदर ਦਾ ध्यान खास रखना है। इफेक्टिवनेस देखने ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? contractions देखनी है lasting less than 60 seconds and every 2 to 3 minutes, increase uterine tone and no evidence of PPH. Now methyl argonovine, ठीक है, मिथाइल अर्गोनोविन यूट्राइन स्टिमुलेंट है and most common complication is hypertensive crisis. So do we give this in patients with known case of hypertension? No, we do not. ठीक है। नर्सिंग कंसिडरेशंस की है, वाइटल साइंस मॉनिटर करोगे, मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस एज headache, nausea, vomiting, increased BP and pain in occiput, pain headache देता ही है, ठीक है। Now monitor for uterine tone and bleeding, monitor emergency interventions. Now contraindications की है, मिथाइल अर्गोनोविन दिया, हाइपरटेंशन कर दूंगा, प्रीक्लैम्पशिया, अस्थमा और कार्डियक डिसीजेस। Now nursing considerations, जिन्हों रीनल या हेपेटिक डिसीज है उन्होंने कॉशन दे नाल दोगे, डायबिटीज सेप्सिस वाले ਨੂੰ ध्यान दे नाल, यूज ओनली आफ्टर डिलीवरी नॉट ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। इंटरेक्शंस की है, वेजोप्रेसर्स अर्गोट्स इंक्रीज द इफेक्ट। नर्सिंग कंसिडरेशंस दे विच अवॉइड कॉन्करेंट यूज विद एनी अदर ऑक्सीटोकिक्स, वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं। इफेक्टिवनेस देखने लिए की करोगे, कॉन्ट्रैक्शन देखनी है ने लास्टिंग लेस देन 60 seconds and every 2 to 3 minutes, increase in uterine tone and no evidence of postpartum hemorrhage. टोकोलिटिक ड्रग्स, हुन मैंने दसो टोकोलिटिक ड्रग्स देने क्यों है? कॉन्ट्रैक्शंस नो रिड्यूस करेंगे, टू reduce maternal myometrial contractions or to slow down labor. ठीक है। तो ਇਹਦੀਆਂ प्रोटोटाइप मेडिकेशंस ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ टर्ब्यूटलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोएट। तो टर्ब्यूटलिन बारे आप ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर लिया। अदर मेडिकेशंस आर निफेडिपिन। सो टर्ब्यूटलिन इज बीटा एगोनिस्ट, बी बीटा एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट। Nifedipine is calcium channel blocker. Indomethacin is NSAID. Magnesium sulfate भी अपन देने हैं। तो टर्ब्यूटलिन is a beta 2 adrenergic receptor relaxing uterine muscles, but it increases maternal heart rate, ठीक है। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोएट, a progestin hormone and only FDA approved medication to prevent preterm labor. Mechanism unknown है, बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यूज करना जिस सिंगल टन प्रेगनेंसी होवे, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ मल्टीपल प्रेगनेंसीज होवे ਉਹਦੇ ਚ यूज करांगे। नाउ टर्ब्यूटलिन देना किवें है? तो सबक्यूटेनियस देने ਆਪਾਂ, ठीक है। कैन बी गिवन अप टू 24 hours to delay but not to prevent the labor. Hydroxyprogesterone caproate decreases risk of recurrent preterm births. Nifedipine calcium channel blocker equally effective है। Indomethacin suppress labor करता है by inhibiting synthesis of prostaglandins. मैग्नीशियम सल्फेट CNS डिप्रेसेंट भी है, तो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कर देता है। प्राइमरीली ਆਪਾਂ सीजर्स प्रिवेंट करने भी यूज करते हैं ਇਹਨੂੰ, ठीक है। इंटरेक्शंस विद टर्ब्यूटलिन, माओ इनहिबिटर्स, ग्रीन टी, डिक्रीज इफेक्ट बाय बीटा ब्लॉकर्स। हाइपरटेंसिव क्राइसिस ਲਈ नोट करना है एंड अवॉइड यूजिंग विद द बीटा ब्लॉकर्स। मदर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? टैकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, हाइपोकलेमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। Intolerable BP less than 90/60, heart rate greater than 130, chest pain, pulmonary edema and cardiac arrhythmia. So जो दिख रहे हैं स्टॉप करनी है ड्रग। बच्चे ਦੇ ਵਿੱਚ भी टैकिकार्डिया कर सकते हैं, जे हाइपर सेंसिटिविटी होवे ਤਾਂ नहीं देनी। लिवर या किडनी डिसीज है ਤਾਂ भी कॉशियसली डोज देनी है। वाइटल साइंस, ब्लड शुगर, पोटेशियम ध्यान नाल नोट करनी है।
Notify the provider for intolerable adverse effects. Have propranolol available because propranolol is a beta blocker. It's a beta blocker. तो बीटा ब्लॉकर जिथे ਆਪਾਂ बीटा ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ बीटा blocker ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਓ moving ahead to hydroxyprogesterone caproate. Hydroxyprogesterone caproate, it's also a tocolytic. पेन स्वेलिंग इचिंग एंड हाइव्स कर सकता है तो इंजेक्शन साइट पे रिएक्शन हो जाती है तो क्योंकि एक्टिवेट करता है तो हाइपरटेंशन हो सकती है लिवर डिसीज वगैरह से नहीं देना एंड हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस तो निफेडिपिन बारे आप पढ़िया है वैसे बट देख लेने हैं क्योंकि हाइपोटेंशन है चक्कर भी आएंगे सिर भी दुखेगा उल्टी भी आएगी मैनिफेस्टेशन एडवर्स इफेक्ट ਦੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਬੀਪੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਪੀ ਘਟਾ ਦੇਗਾ ਲਿਵਰ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਵਾਲੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ और जे किसी ਨੂੰ ਹੁਣੇ MI ਆਇਆ मतलब हार्ट अटैक आया ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਤਾਂ ਟਰਬਿਊਟਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ इंट्रैक्शंस level of digoxin phenytoin beta blockers antihypertensive जिंको जिनसेंग ग्रेपफ्रूट सब ने सारे ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ सिमेटिडीन रेंटिडीन सेंट जॉन वॉट मेलेटोनिन ਇਹਦੇ टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर ਦਿੰਦੇ ਆ तो अवॉइड विद ग्रेपफ्रूट तो ये बहुत एक कॉमन चीज है ये हमेशा पूछते हैं निफेडिपिन ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ग्रेपफ्रूट समझ गए ग्रेपफ्रूट ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ जिंको बाइलोबा ਇਹ ਇੱਕ sort of blood thinner ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ this also increases risk for bleeding both risk for bleeding ਨੂੰ increase ਕਰਦੇ मेलाटोनिन भी है एंड सेंट जॉन्स वॉर्ट तो सेंट जॉन्स वॉर्ट मैं पढ़ाऊंगा ਤੁਹਾਨੂੰ सेंट जॉन्स वॉर्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੌਟ ਫਲੈਸ਼ਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾउ इंडोमैथिसिन ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੰਨੇ ਆ nausea vomiting heartburn GI bleed and thrombocytopenia कर सकती है मतलब decreases the platelet count less than 1.5 lakhs fetus ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ neonatal pulmonary hypertension oligohydramnios means decrease in amniotic fluid mostly less than 500 ml ਹੁੰਦਾ ਹੈ ठीक है तो इना घट एमनियोटिक फ्लूइड एडवर्स इफेक्ट्स ਲਈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ठीक है ब्लीडिंग रिस्क हो सकता है जो एंटीकोगुलेंट्स ਦੇ ਨਾਲ यूज कर रहे हो हाइपरकलीमिया कर सकता है लिथियम की टॉक्सिसिटी कर सकता है एनसेड नहीं देने क्योंकि ब्लीडिंग करेगा अल्कोहल सैलिसाइलेट्स ठीक है मॉनिटर फॉर टॉक्सिसिटी ब्लड विजन एंड रिंगिंग इन द एयर ये इंडोमेथिसिन ਨਾਲ रिंगिंग इन द एयर हो रही है मींस देयर इज टॉक्सिसिटी एंड यू हैव टू स्टॉप द इंडोमेथिसिन start and you have to inform the PHCP ठीक है कॉन्ट्राइंडिकेशन की है जो ऑलरेडी कितने ब्लीडिंग हो रही है हाइपर सेंसिटिविटी तो देनी नहीं जिन्हों सीजर आ रहे हैं रीनल डिसीज है जीआई डिसीज है कार्डिक डिप्रेशन है नहीं देनी क्लाइंट्स 32 वीक्स तो घट होएगा उन्होंने ही इंडोमेथिसिन दे सकते हो क्योंकि ए पीटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस तो बंद कर देगा बंद तो आफ्टर बर्थ होनी चाहिए ना ड्यूरिंग फीटस फीटल लाइफ नहीं बंद होनी चाहिए अमन दीदी नींद आ रही है लग रहा दवाइयां देखो दवाइयां सुन के ताइयों मैं कॉपी के आके खोल कर कैमरास ऑन खोली हुई है हाँ नाल नाल थोड़ा बहुत लिख लिया करो क्योंकि कुछ चीजां तो ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ बोरिंग वाला भी तो मैग्नीशियम सल्फेट ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਮਨ ਦੀਦੀ ਬੋਲੋ यूरिन आउटपुट ये मेरा टेंशन आएगा नाल ब्रेडी कर यूरिनरी आउटपुट घटेगी और घटेगी और हार्ट रेट को घटेगा हाँ डिस्ट्रेस होएगा ना फीटल हार्ट डिस्ट्रेस रेट होएगा घटेगा नहीं पहले मदर ਦਾ ਦੱਸੋ यूरिन आउटपुट घटेगी हार्ट रेट घटेगा फिर बीपी हाइपोटेंशन बीपी घटेगा और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस घटनगियां और रह गया कुछ हो गया ऑलमोस्ट ठीक है तो इट कैन लीड टू हाइपोकैल्सीमिया हॉट फ्लैशेस डिस्निया एंड ट्रांजिएंट हाइपोटेंशन
Respiration less than 12 should be reported. Pulmonary edema, altered level of consciousness, severe hypotension, urine output less than 20 ml per hour, magnesium level 10 ml or greater. It leads to distress. ठीक है? ਹੁਣ देखो यूरिन आउटपुट यूजुअल नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितनी होती है? नॉर्मल यूरिन आउटपुट अमनदीप दसो 1.5 2 लीटर तक 1.5 to 2 लीटर तक yes it normal 18 person 1.5 to normal 2 liters कह सकते हैं 2 लीटर but in catheterized patients 30 ml per hour so this is wrong it is 0.5 to 1 ml पर kg पर आर वैसे ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਬਟ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 0.5 to 1 ml ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਜੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਬੋਡੀ weight 90 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 45 to 90 ml ਪਰ ਆਰ ਯੂਰਿਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 0.5 to 1 ml per kg per hour should be the urine output in a patient who is catheterized जो दिन in urine output नहीं आ रही it means the person is either receiving less of the fluids or person is either in the dehydrated or person is landing into acute kidney injury समझ पा रहे हो are you able to understand this okay now बच्चे ਦੇ ਵਿੱਚ नॉन रिएक्टिव एनएसटी होएगा तो नहीं देनी ठीक है रिड्यूस फीटल हार्ट रेट वेरिएबिलिटी नर्सिंग कंसिडरेशन की है वाइटल साइंस लेने हैं मैग्नीशियम के लेवल चेक करने हैं फ्लूइड नु 125 ml पर आर तक ही देना है कैल्शियम ग्लूकोनेट अवेलेबल रखना है इंटरेक्शन की है एंटी हाइपरटेंसिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड नहीं देने बाकी नु मॉनिटर करते रहना बीपी नु टॉक्सिसिटी नु भी ठीक है कॉन्ट्राइंडिकेशन कितने होएगा hypersensitivity होवे abdominal pain heart block avoid concurrent use with the nifedipine तो now ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ तो erythromycin it's given in ointment form ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ointment नोट कर लो it's given in the ointment form ठीक है so this is given in the ointment form देनी कितना है लगानी कितना है 1 to 2 सेंटीमीटर रिबन टू बोथ आई देना है इनर टू आउटर कैंथस विद इन 1 hour of birth आई इरिटेशन इज एक्सपेक्टेड ठीक है विटामिन के है विद इन 1 hour of birth in vastus lateralis or anterolateral aspect of thigh given as IM redness or edema at the site is accepted hepatitis B दी वैक्सीन बिफोर डिस्चार्ज IM दोगे जे मदर पॉजिटिव है तो एडमिनिस्टर विद hepatitis B immunoglobulins within 12 hours of birth. Is it clear? Clear है कि नहीं है? Okay. Now, any doubt with till here? ਦਵਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ that is registered in our short term memory ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਓਵਰ ਐਂਡ ਓਵਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ that gets converted into long term memory ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ I told you the method of revision ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ method of revision should be 4 to 5 hours usually out of this what should be your method you should revise previous lecture ਤੁਸੀਂ revise ਕਰਨਾ 30 minutes ਲਈ then you will start with the other lecture next one 1 hour ਦਾ again ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ next ਦਿਨ ਦਾ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 hour ਦਾ ਉਹ ਪੜੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ 30 minutes ਦਾ ਉਹ ਪੜੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ 15 minutes ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਇਦਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਪੂਰਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਜਾਏਗੀ, ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਜਾਣਗੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਐਟ ਬਰਥ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆਈਐਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਉਂ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ ਹੈਮੋਰੇਜਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਬੋਰਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ that is a technique how you will revise, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਐਂਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ।